Good morning, everybody. Ready the fourth class of 10th Geography. Now we will study about the next topics, the resources development. Third topic. First topic, listen and memorize and remember the last classes which we were studying in the first and second, third classes. The first topic I was teach you the resources, meaning and the definition. That was the first topics. And second topics, classification of the resources from the different base. And now the third topics of this lesson. The lesson is resources and development. Third topics. First topics was the resources, meaning and the definition. Second, the classification of the resources. And third, resources development. The resources which are used and developed. All the natural things which satisfy our needs is called resources. Everything which are available in our environment and that satisfy. Everything which are available in our environment and is called the natural resources. लेकिन जो नेचर में रिसोर्सेस मिलते हैं डायरेक्टली हम उसका यूज नहीं करते हैं, हम उसको डेवलप्ड फॉर्म में यूज करते हैं. अगर रिसोर्सेस को डिफाइन करेंगे तो देखेंगे एवरीथिंग व्हिच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी जो जरूरतों को पूरा करता है. लेकिन जरूरतों को पूरा जब करता है तो उसको करने के लिए या उसका यूटिलाइज करने के लिए हम उस नेचुरल रिसोर्सेस को डेवलप्ड करते हैं और उसके डेवलप्ड फॉर्म को रिसोर्सेस लेते हैं. एग्जांपल ले लो, अगर अंडरग्राउंड वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक डिवाइस लगाते हैं, हैंड पंप लगाते हैं और हैंड पंप से हम उस वाटर को बाहर निकालते हैं. हैंड पंप क्या है? तो हैंड पंप इज टेक्नोलॉजी और हम उसको डेवलप लगाते हैं, उसको पंपिंग करते हैं. तो पंपिंग विथ द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, और जब हम उसको गेन करते हैं तब उसका यूटिलाइज करते हैं. तो वो वाटर नेचुरल थिंग्स है, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी हम उसको डेवलप फॉर्म में गेन करते हैं, तब हम उसका यूटिलाइज करते हैं. हम आयरन ओर का यूटिलाइज नहीं करते हैं, स्टील का यूटिलाइज करते हैं और वह स्टील नेचुरली हम गेन करते हैं और नेचुरली आयरन ओर गेन करते हैं. लेकिन उसको डेवलप जब करते हैं तो डेवलप करने के बाद हम उसको फिर स्टील में कन्वर्ट करते हैं, आयरन रॉड में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसका यूटिलाइज करते हैं. अब ये जो डेवलप्ड फॉर्म में हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो उस यूटिलाइज करने को यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस लेते हैं और उस नेचुरल रिसोर्सेस को जो डेवलप्ड फॉर्म में लाते हैं, इस मेथड्स को हम ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस डेवलपमेंट. सो द रिसोर्सेस व्हिच आर नेचुरली बी ऑब्टेन कैन नॉट यूज देम विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ देम. बिना उनको डेवलप किए, उनको विदाउट द डेवलप किए, विकसित किए हम उसके यूटिलाइज नहीं करते हैं. सेकेंड जानो कि रिसोर्सेस डेवलपमेंट इज, जो रिसोर्सेस को हम डेवलपमेंट करते हैं वो दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस इन विच थ्री कंपोनेंट्स. जिस प्रोसेस को रिसोर्सेस डेवलपमेंट को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेस में, तो उसमें थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर प्ले द मेजर रोल. व्हाट आर द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस, सेकेंड टेक्नोलॉजी और द ह्यूमन स्किल, or third institution and the association. These are the three components by which we can convert to the natural resources into a developed resources. Okay, understood about this by these equations. एक इक्वेशन लेते हैं और इस इक्वेशन से हम समझेंगे. हम तीन कंपोनेंट्स लेंगे. अब कह रहा है पहला कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ resources development. Okay, resources development. Okay, अब इसके लिए हम तीन कंपोनेंट्स है. पहला है नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एसोसिएशन एरो देंगे and then we get the developed resources which are used by
human being. This process, this equation is called transforming process या transforming equations of the resources development. अब we learn about this without any important. These are the three important components for the resources development. Without any of them, we cannot complete the development of resources. In your books, it is explained by a figure, by a important figure, or on which base we can explain and we understood about this, about the importance of the components. There is a figure in your page number 1. आपका जो बुक है उस बुक के पेज नंबर 1 पे आप देखेंगे, then you find this figure. A, natural resources. Okay, natural resources. B, technology. And C, association. And now these are the designs of this. Oh, human being. Okay, these figures explain about the importance of the components. These figures explain the equations of the resources development of the resources. These figures explain about the transforming process of the resources development. Okay, up now understood about this. There are the three. It is a angle, it is a triangle, एक त्रिभुज है. And now you know about this. There are the three angle in a triangle. एक एंगल में तीन ट्रायंगल होता है. A, B, C. C तीन है. अब A, B and C three important angle in the triangle. अब ये देखेंगे तो आप कह रहा है रिसोर्सेस जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो इस त्रिभुज से समझेंगे, इस ट्रायंगल से समझेंगे. ए कहता है कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है नेचुरल रिसोर्सेस, बी कहता है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वह टेक्नोलॉजी है, और सी कहता है एसोसिएशन है. और ये तीनों एक मिलते हैं तब नाउ द ट्रायंगल ऑफ द रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड. तब इससे ये बनता है. विदाउट वन ऑफ देम, किसी एक भी कंपोनेंट्स को हटाएंगे तो नाउ द रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द रिसोर्सेज डेवलपमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटेड. ये पूरा ही नहीं होगा. एक जैसे हटाएंगे, सच है. विदाउट वन एंगल वी कैन नॉट कंप्लीट द ट्रायंगल. एक एंगल को अगर हम हटा देंगे, इस एंगल को हटा देंगे, क्या हमारा ट्रायंगल होगा? हमारा ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा. अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए तीनों एंगल जरूरी है. एज द सेम ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए ये तीनों कंपोनेंट्स आर थर्ड इंपॉर्टेंट. Without one of them, our transforming process of the resources development cannot be completed. The first, second, third कह रहा है. अगर तीनों को हम करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में सेंटर में जाएंगे. अब तो देन यू फाइंड द ह्यूमन बीइंग. कह रहा है कि ये जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, इस प्रोसेस के सेंटर में जो इंपॉर्टेंट और द मेजर रोल प्ले करता है वो कौन करता है? ह्यूमन बीइंग. हु गेट द नेचुरल रिसोर्सेज? ह्यूमन बीइंग. फॉर हुम, किसके लिए करता है? तो फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. आर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय देम? By whom? The human being. Who use the technology? The human beings. Are associations? Who form the association? By the human beings. Without the human beings, these three important components are not connected to each other. Okay, so human being is the most important natural resources in the world on the earth. Okay, human being is the best resources. Okay, one number questions आ सकता है. Which is the best example of the resources? Which is the best resources of the environment? Which is the best natural resources? The human being is the best resources. Why पूछ देगा तो why के लिए आप जैसे लगा देंगे तो कह देंगे कि टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, इट इज कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स. एंड सेकंड, एवरी नेचुरल रिसोर्सेज आर डेवलप्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, सो ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, अब नाउ द फिगर ऑफ दिस. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? अब ये फिगर बना दिया जाएगा और फिगर बनाने के बाद ये आपको हटा दिया जाएगा. कहेगा फिल इन द ब्लैंक्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ क्या फिल करेंगे? तो फिल एक्स की जगह पर क्या होगा? द नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंड कह सकता है कि चारों ये फिगर दे देगा और सेंटर वाला पार्ट में कहेगा एक्स. व्हाट इज दिस?
क्या चीज होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग, ओके, द ह्यूमन बीइंग, ओके। अब इस पे क्वेश्चंस जो आएंगे, ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द डेवलपमेंट के प्रोसेस है, और वी बाय दिस प्रोसेस वी डेवलप्ड द रिसोर्सेज एंड देन यूज ऑफ them. Without the development of the resources, we cannot use the resources. Okay, ये transforming process of the resources है. अब now the important questions from these topics. अब इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस होंगे, अब उस क्वेश्चन को जानेंगे। हमने आपको इसको बताया, 2 इंपॉर्टेंट फेज में हमने बताया है कि 2 इंपॉर्टेंट फेज है। इस इंपॉर्टेंट फेज में है ट्रिंगल बेस पर हमने समझाया कि कैसे इसका इंपॉर्टेंस है, और इस टेम्पल बेस पर हमने एक इंपॉर्टेंस को समझाया कि ह्यूमन बीइंग्स है, और ये बताया कि ये तीनों कंपोनेंट्स के बिना, किसी एक के बिना हमारा रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अब नाउ राइट डाउन द क्वेश्चंस। अब नाउ क्वेश्चंस क्लास है, आप क्वेश्चंस लिख लीजिए इस पर। क्वेश्चन है, explain the relation between, explain the resources, explain the relation between natural resources, technology and human, technology and association in the transforming process of resources development, ओके। इसी का और क्वेश्चन दे सकता है, फिगर दे देगा, नेचुरल रिसोर्सेस, ऐसे कर देगा फिगर ए बी सी। क्वेश्चंस होंगे, fill in the blanks and explain them. Okay, these are the 2 important questions, but these are the 2 important, but both are the same questions, and we can explain to these questions from these early topics. Okay, thank you. Have a nice day for the second, fourth classes. Okay, bye.